Good morning, my dear students. Welcome back. In today's class, we're going to revise the third topic of life process, transportation system. In the previous video, we have done two main topics, nutrition and respiration. Now it's a time to discuss transportation system also. It is a very important part of this chapter. Let's start. What is transportation system? This is the system in which number of fluids filled in a tube and that fluid to be transported from one place to another. Transportation system comprises three main components: blood, blood vessels and heart. Number one, blood. Blood is a movable red color fluid that is carried by the blood vessels. The main function of blood is to supply the nutrients and oxygen to the cell and absorb the undesired components of cell like carbon dioxide and other toxic substance. It also carries hormones in a human body. This is the function of blood. Blood consists of two main parts, plasma and corpuscles. Corpuscles is of three types: red blood cell, white blood cell and platelets. We already have done blood in 9th class because this is a part of vascular tissue in details. Now the number two component of transportation system is blood vessels. Blood vessels are the tube that carries blood in a human body, that circulates blood in a human body, and it is of three types: arteries, vein and capillaries. The similar function of all three blood vessels, or you can say all three tubes, is that they all carry blood. So what is the main difference between these three blood vessels? Number one, artery. You can see the diagram of artery here, and this is a diagram of vein, and the space between these vessels are called lumen. क्या बोलते हैं उसको? ल्यूमन बोलते हैं. ठीक है. On the basis of structure, arteries has narrow lumen. कैसा lumen है? Artery has narrow lumen. And in the vein, on the basis of structure, vein has wide lumen. You can see the space also. The space is more as compared to this vessel. This is artery. The main function of artery is to carry blood. From where to where? It carries blood from heart and transfer to the body. From the heart to the body. This is the function of artery. And it carries aerated blood. Aerated blood means oxygenated blood. Due to the narrow lumen here, my dear students, the thickness of artery is more as compared to the thickness of veins. You can see the more thickness here. This is more thick. This is thin. This is thick. Why there is a need of thickness here? Because it carries blood from the heart, and heart has more pressure. Heart के पास काफी ज़्यादा pressure होता है. Due to the main function of this thickness is to bear that pressure. उस pressure को bear करने के लिए thickness का होना बहुत जरूरी है. Otherwise arteries rupture हो सकती हैं. But due to the thickness ऐसा नहीं होता है. ठीक है ना? It carries blood from the heart to the body. It carries oxygenated blood. ठीक है ना? कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. वेन्स की अगर हम बात करें, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट. It brings deoxygenated blood back to the heart. Okay? Deoxygenated blood. And it has a wide lumen, and inside the inner surface of vein has a number of valves.
What is the function of wall? It prevents the backflow of blood in veins. Okay, so this is the main characteristics of arteries and veins. Now it's a time to discuss capillary. Capillary also carry blood, and the main function of capillary is to combine the arteries and vein. It makes a junction between the arteries and vein, and it is a ultra thin vessels. सबसे जो पतली वेसल्स होती है वो आपकी कैपिलरीज होती है, एंड द मेन फंक्शन ऑफ कैपिलरी इज टू कंबाइन द आर्टरीज एंड वेन. जहां पर भी आर्टरीज और वेन होंगी आसपास, तो उनको कनेक्शन जो काम होगा कनेक्शन का, वो कैपिलरीज का होगा. और थर्ड फंक्शन कैपिलरी का, तो अभी दो फंक्शन हम डिस्कस किए हैं कि इट इज अल्ट्रा थिन and it connects arteries and vein, it carries blood. Now third function, this is the only vessels which exchange materials with the cell. Yes, I'm right, arteries और vein materials exchange नहीं करती हैं. What are the materials? Oxygen and food. Oxygen and food is transferred to the cell with the help of capillaries only, because due to the ultra thin nature of capillaries, due to the ultra thin, इसकी जो surface होती है वो ultra thin होती है, and it is permeable also. This not artery is not permeable, vein is not permeable, but capillary is permeable due to the ultra thin structure of capillaries. ठीक है ना? So this is all about of blood vessels and blood. Now it's a time to discuss heart. My dear students, before going to start heart, we have a topic named blood clotting. So first of all we're going to discuss this topic, blood clotting, and after that we're going to start heart. My dear students, what happens when a tissue is injured? What happens when a tissue or organ is injured? Blood clotting happens. But if blood clotting does not happen, then उसके बाद क्या होगा? There is a excessive loss of blood. But our system has natural weapons to control the loss of blood, called blood clotting. Blood clotting is a very complex process that done with the help of platelets. किसकी हेल्प से होते हैं? प्लेटलेट की हेल्प से होते हैं. When tissue is injured, some cells are also injured. Cells contain and some cells of blood also injured, क्योंकि blood circulates in the all in the body. ठीक है ना? तो अगर blood के cells भी injured होंगे तो RBC, WBC भी injured होंगे, platelets भी injured होंगे. When platelets injured, they release a protein named thromboplastin. Platelets release a substance called thromboplastin when it is injured. When it is injured, ठीक है ना? This thromboplastin protein convert prothrombin protein into thrombin. What is prothrombin? Prothrombin is a protein that is present in the liver with the help of vitamin K. Vitamin K helps in the formation of prothrombin protein. ये protein है, protein in the liver. When prothrombin meets with the thromboplastin, it's converted into thrombin. Thrombin is also a protein. सब पूरा का पूरा जो गेम है प्रोटीन का ही बेटा. ठीक है ना? When thrombin form, what happen? Thrombin convert fibrinogen protein. ये भी प्रोटीन है. एक प्रोटीन कहां पर होता है? This is a protein present in the plasma. प्लाज्मा के अंदर ये प्रोटीन होता है. ठीक है ना? Thrombin converted this plasma fibrinogen into fibrin. This is the final product, जिसको हम क्लोट बोलते हैं. जो यहाँ पर डार्क कलर का जो इंजरी जहां पर होती है, तो डार्क कलर का सरफेस एक लेयर बन जाती है, डार्क कलर की लेयर, हार्ड लेयर. वो हार्ड लेयर फिब्रिन ही है. ठीक है ना? तो स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन से. ये सबके सब प्रोटीन है. दे ऑल आर प्रोटीन. थ्रोम्बोप्लास्टिन कब रिलीज हुआ? जब प्लेटलेट्स इंजर्ड हुए. थ्रोम्बोप्लास्टिन ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया. तो ये भी दोनों प्रोटीन है. इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, फिब्रोजीन कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन. ठीक है? और जब फिब्रिन के एक मॉलिक्यूल बनता है तो अगेन एंड अगेन बनते चले जाते हैं. ठीक है? जिसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट्स. और ये सेव कर लेता है एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड. ठीक है? इससे ब्लड
ज़्यादा बॉडी से बाहर नहीं जाता है, उसको चेक करता है। अब हार्ट सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फंक्शंस भी कर लेते हैं, फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्या फंक्शंस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के? देखो, मेन उसके अंदर फ्लो करता है ब्लड, और ब्लड फ्लो जो फंक्शन ब्लड का है वही फंक्शन आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का भी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो वर्क करना है वो ब्लड नहीं करना है, ठीक है ना। तो ब्लड का क्या मेन फंक्शन है? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सेल, it provides oxygen to the cell, it maintains the average temperature of the body. Due to the red color of due to the presence of hemoglobin in blood, it provides oxygen, it absorbs oxygen and it also absorbs CO2 from the cell, ठीक है ना। ये सारे के सारे फंक्शन आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के भी हैं और ब्लड के भी हैं। और फंक्शन, ब्लड कैरी हॉर्मोन्स आल्सो, जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वहां से जो ब्लड है वो हॉर्मोन्स को कैरी करके टारगेट साइट पे लेके जाता है, ये भी आपका फंक्शन ब्लड का है। और जो अभी ये फंक्शन हमने किया ये भी तो आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ही फंक्शन है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं होगी, तो ब्लड क्लॉटिंग भी फंक्शन आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का है। तो कितने सारे फंक्शन हैं हमारे ब्लड या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के। और फंक्शन की अगर बात करते हैं तो इट सेव्स यू फ्रॉम द foreign particles, it saves from you the pathogens, microorganisms with the help of WBC, जो आपका डिफेंस सिस्टम है। तो ये भी फंक्शन आपके ब्लड का या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अभी हमारा जो मेन टॉपिक बचता है वो हार्ट का है। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट को डिस्कस करते हैं।